8-bit numbers. What is the representation of 10? How do you write 10? 0 1 0. Is this okay? Yes, ma'am. So I have to shift this using 2 bits. Now, since I have to shift it by 2 bits, obviously I will not consider this 2 bits. Shift this by 2 bits. Okay. By 2 bits, if it was 4 bits, that means I'll leave this 4 spaces blank. I will shift this last digit on the slot. Fine. So it will be 0 here. Then this will be 1, 0, 1, 0, this 0. And these two will be padded with zeros. Yes. मैम बोर्ड शो नहीं हो रहा है. बोर्ड शो नहीं हो रहा है मतलब मैम इट्स विजिबल. हो रहा है. मैम अब इसका मैं- बोर्ड Visible, ma'am. Visible. इनकमिंग ऑन नहीं हो फिर रहा. से ज्वाइन कर मैम लो. मेरे ब्रांच में एक लड़का है, उसको इनकमिंग वीडियो को ऑन कर लो भाई. एक इनकमिंग बार ऑन. देखना ऑफ करके एक बार फिर से ऑन करो. Okay, ma'am, will try that. ये समझ में आ गया. ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट. ठीक है. When I shifted my whole bits towards my left. So what number do you get here? This was 10. 40. What number do you get here? 40. 40. 2 to the power 5 plus only the ones. That was the way you were dealing with how to convert binary number into decimal number. 1 into 2 to the power 5 plus this. All the 1 digits, right? That is why I have numbered it 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this was. So left shift of 10 is 40. Right? So again, if you have to right shift this. Instead of this, if I have to right shift this. किसको डाउट्स था इसमें वो मुझे राइट शिफ्ट करके बताएगा. मैम राइट शिफ्ट में दिक्कत हो गया था. आप मुझे बताओ कितने लोगों को प्रॉब्लम है राइट शिफ्ट में. सर मैम हमको भी मैम. हमको भी. ओके मैम हमको भी है. ठीक है. राइट शिफ्ट. मतलब आपका ये कंफ्यूजन है कि इसको शिफ्ट करें कि इसको शिफ्ट करें. राइट. ये एक पॉसिबल कंफ्यूजन हो सकता है. अभी हमने यहाँ से शुरू किया था जब लेफ्ट शिफ्ट करना था. राइट शिफ्ट करना तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं. तो 2 बिट्स. ठीक है. ओके. जब हमने राइट शिफ्ट करना था तो हम इस तरफ से शुरू करेंगे. राइट की तरफ से, सॉरी लेफ्ट की तरफ से, तभी हम राइट शिफ्ट कर पाएंगे. अगर इसकी तरफ से शुरू करेंगे हम राइट की तरफ से तो हम राइट शिफ्ट किधर करेंगे. तो ये क्या है. ये कौन सा नंबर है. What is this number? 2 मैम. 2 मैम. 2. If you shift this right, you get 2. Clear है. यस मैम. यस मैम. Any doubts? No, ma'am. Okay. नो मैम. Bitwise not आपका क्लियर हो गया था. यस मैम. Bitwise not आपको जस्ट
Suppose bitwise not, this is bitwise not, okay. If I have to change this, 10 ka representation in binary is 1010. So if I use this bitwise not, it will be, instead of 0, it will be 1, 1, 0. Okay. This is your final answer. That means it is 5. ठीक है? उस दिन हम यहाँ पर रुके थे, याद है आपको? Next. Under we were dealing with binary operators, right? कितना operators हो गया था उसमें? 4 हो गया था. Next one is equality. Equality is either this in C. If I say equality of operators, that means I use 2 equal sign. I cannot put this is not equality in C. I said this is assignment operator. We'll talk about this also. But if I have to say, if I say 2 equal to's, which means A, the value of A is equal to 5. Okay. Otherwise, it is equal to or not equal. Fine. Is it okay? Next. Yes, ma'am. This was one operator. I forgot the numbering actually. I think it was 5th. Yes, ma'am. It's what fifth. Yes. Next is comma operator. This is how you represent comma. So look at the usage. If I say I make 2 variable declarations, this is first variable A, this is next variable B. I can declare all Ma'am, these 2 there are variables. students. Please give them entry. Yes. There are some students waiting in the line. Please give them entry. Okay. I can declare these 2 variables in one line also. Okay. A comma B. Now here, this comma, it is acting as a separator, not as an operator. Okay. Under which classification I am giving you this? Under unary operator or binary operator? This one is under binary operator, right? Yes. Please turn your pages and see under what you are writing. It is under binary operator. Yes, ma'am. Yes. Okay, so here it is acting as a separator, not an operator. The usual way. Fine. Suppose I say int now see. Now here, this is acting as an operator. I am saying comma is a binary operator. That means it will require 2 operands. Fine. This is my first operand. This is my second operand. Now, how does it work? This is semicolon. Okay, this is the end of the line. I'm talking about this operator. What it will do is, the purpose of this operator is, it will evaluate this. Okay, first operand is evaluated but rejected. Okay, it will definitely evaluate this, but it will reject it. Okay, and the second one, it will here. Second operand, of course, if I'm using this, I'm evaluating this. Instead of 5, there's nothing to evaluate here.
But instead of 5, I can also give an expression to you. It will be evaluated, but it will be rejected. Okay. And the second operand will be returned to this. This is the main funda of comma operator. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, This ma'am. means assigned to A. Yes. किसी को कुछ डाउट है? इसका मतलब 4 मैम, A तो में 5 आवाज नहीं आ रही आपकी. मैम मतलब 5 कभी असाइन ही नहीं होगा मैम जब कॉमा ऑपरेटर लेंगे. एक मिनट. इसका असाइनमेंट के लिए हम नेक्स्ट वाला ऑपरेटर देखते हैं. उसके बाद मैं फ्यू पॉइंट्स बता रही हूँ. उसके बाद विल कम टू दिस. ओके. 5 कभी असाइन नहीं होगा ऐसा मैं नहीं कह रही. आप यहाँ पे बस समझ लो कॉमा का पर्पस क्या है. फर्स्ट वाला ऑपरेंड इवैल्यूएट होगा. दिस इज इंपॉर्टेंट. इवैल्यूएट होगा लेकिन रिजेक्ट होगा. मतलब अगर कोई एक्सप्रेशन है या कोई फंक्शन है वो काम करेगा लेकिन वो रिजेक्ट हो जाएगा. वी विल टॉक अबाउट दिस ऑपरेशन. नेक्स्ट. असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर को हमने कई बार देखा है. int a equal to 5. That means I'm assigning the value of 5 to a. Right? This is your assignment operator. Is it okay? Yes, ma'am. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. For this part, you were doubtful whether 5 will be assigned to a or not. Let me tell you something. We have seen so many operators till now. We have seen unary operators, binary operators. These are all binary operators. We are done with binary operators now. So we'll talk about ternary operators. Then maybe I can talk about this precedence and associativity. Ternary operator. Ternary operator means what? I have this is the syntax of ternary operator. Okay, that means this is a condition. Okay, you check a condition under expression 1. If this condition is true, the output is this expression 2. Otherwise, it is expression 3. Fine. Is it okay? Yes, ma'am. You check this condition. If the output is coming to be true, if the output of this condition is true, this will be evaluated. That means that will be the output. Otherwise, it is this expression 3. Now let's look here. So what do you think? I have declared A to be 10. I have initialized A as 10 and B as 5. I'm using this ternary operator. This is my condition. Condition checking. If this comes out to be true, this has to be the output. Otherwise this. So A, 10 greater than 5. Is it true? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So output should be 10. this 10. 10. Okay. That means x equal to 10. Otherwise, instead of this, if I give A as 10 and B as 50, 10 not greater than 50. So what should be the output? This condition is false. That means
It will print B. B will be down. 15. So X will be 15. Right? Yes, ma'am. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, we have completed all the operators. We have seen all the operators. Now, you should know in which order you are to evaluate these operators, right? If multiplication is given, if you are giving this two expressions, okay. So can you tell me the output? Are these two same? First No, one, ma'am. what is Ma'am. Yes, 13. 13. First 13. 30? Second one is 13, ma'am. 11. Second, 11. 11. 11. why? What made you give two different outputs? The numbers were same, the operators were same, just the orders were different. Board What made you mass. give this output? Priority. Board mass rule, ma'am. Board Bed mass. mass. Priority. That is called precedence. Okay, that is called precedence rule. Which operator will precede which operator? Here, multiplication was having higher priority, right? Then your addition, that is why you were evaluating the multiplication part first, right? Was it okay? You had something like this in your mind, Bodmas rule, Yes, ma'am. right? Yes, ma'am. So here also, Yes, Yes, ma'am. here also you got lots of operators, so they need to follow some precedence rule, and not only precedence rule, they need to follow associativity rule also. Now, what will be the outputs? 5. 5 होगा first वाला का. First का 5 होगा. What about this? 2. Okay, forget about integer, float, anything. What you are following? We see multiplication and divide have the same precedence, same priority, right? So what do we follow here? The associativity. Whenever there is a clash between the priorities, we use associativity, right? Whenever two operators are having the same precedence, that means we don't know which one to evaluate. That time we make use of associativity rule. Okay, and these are all left to right associativity. Means whichever operator comes first, that has to be evaluated. This by 5 into 3 was firstly evaluated. So now let me give you a table. You got the usage of precedence and associativity where you can use what? Firstly, you look for the precedence. And if there is a clash, you look for the associativity. You note down this. I'm giving you priority wise, okay? Don't mismatch it. This is left to right. We will talk about this. We'll make use of this operator. This operator has the highest priority and it is following left to right associativity. Then comes your all unary operators. Okay, all unary operators, whatever we discussed under unary operators, they have the next highest priority after parenthesis. And these unary operators follows right to left associativity. Mind you, right to left. Okay. Next comes our
multiplication, divide, and modulus. Right. Next, now you can tell me what is next. Plus minus. Yes. Plus minus. Left to right. Okay, very few of the operators follows right to left associativity. We'll talk about that. This is what? What operator is this? Right shift and left Left shift, shift. right shift. Yes. Right. Left shift, right shift. Then what is this? Equality operators. Equality. This Conditional. is conditional. Logic. What is this? Conditional operator. Less than, equal to, greater than, equal to. Relational. Relational operator, no? Relational. Yes, ma'am. Relation. Then what is this? Equality Equality. operators. Equality. Equality. What is this? Bitwise and. And Bitwise and. What about this? Bitwise? XOR. Bitwise XOR OR. operator. XOR with. Yes, bitwise and or XOR or. Then what about this? What about this? Logical and. Only. ये खाना खा लीजिए बोलो नहीं जाएंगे वो क्लास कर रहे हैं भैया Logical and logical or, this is question mark. We'll talk about that. Maybe we'll use that. That was in ternary operators usage. And comma. This is comma operator. This is left to right. These all are left to right. I haven't written, but please note it down. These are all left to right operators. Okay, except this one. You have noted this down? Yes, ma'am. no. Now 15 तक आप note कर लो. फिर we'll come to that problem. Comma operator. मैम ये लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट का मीनिंग क्या है? लेफ्ट टू राइट यानी कि जब आपके एक्सप्रेशन में अभी ये दोनों का सेम प्रेसिडेंस हो गया, राइट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, तब कैसे फॉलो करोगे, किसको पहले इवैल्यूएट करोगे? तो इसका आप एसोसिएटिविटी देखोगे, लेफ्ट टू राइट, यानी कि आप यूजुअली एक्सप्रेशन ऐसे ही इवैल्यूएट करते हो, लेफ्ट टू राइट, तो इसका एसोसिएटिविटी भी लेफ्ट टू राइट है। पहले जो भी ऑपरेटर पहले एनकाउंटर होगा आप पहले उसको इवैल्यूएट करोगे, ठीक है? मैम तो ये यूनरी ऑपरेटर में, यस, क्या मैम यूनरी ऑपरेटर में राइट टू लेफ्ट, यस, राइट टू लेफ्ट है। हम इसमें डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे इसमें। ओके मैम। ये हो गया आपका प्रॉब्लम? Ma'am, what is written in 10 number? This one, bitwise or. Yeah. Okay, ma'am. Or you can use this also. Okay. Ma'am, someone is waiting in the
हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can I remove it? ये वाला प्रॉब्लम था आपका? राइट. You were asking मैम why? आपका वीडियो फ्रीज हो गया है मैम। Yes, ma'am, not visible. यस मैम, नॉट विजिबल। मैम वीडियो फ्रीज हो गया है। Yes, I could see it. ठीक हुआ? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. नो मैम। Okay, okay. ठीक है अभी? Yes, हाँ ma'am. मैम Yes, ठीक ma'am. हो गया। यस मैम। Okay. So we were discussing about comma operator. Int a equal to 5, 4. Now what was the rule of comma operator? First will be evaluated but rejected. The next will be returned, right? Now look at the first. How many operators does it have? 2 operators. Right. This is assignment operator. This is comma operator. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब एक बार टेबल देखो, प्रायोरिटी वाइज देखो। पहले प्रायोरिटी देखेंगे। अगर प्रायोरिटी में क्लैश होता है तो एसोसिएटिविटी देखते हैं। प्रायोरिटी वाइज किसका ज्यादा प्रायोरिटी है? असाइनमेंट का या कॉमा का? असाइनमेंट का। Assignment. तो पहले 5 हो जाएगा। इसमें ये कॉमा काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है? Is it okay? Yes, ma'am. Okay. Now suppose if I give you what about this? Will it work first of all? And if it works, will you be able to give any values? Yes. बोलो क्या? Will it work? It will give you an error. Yes, ma'am. Why? Since I was using this comma as a separator now, how do I know? I was making a variable declaration and initialization. See, note the difference. Here I declared the variable, then I tried to initialize the variable. Here I made the variable declaration and I have tried to initialize the variable also in the same line using 2 operators, using 2 operands. That is why it will give you an error. Fine.
Can we move ahead? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You take down this program and you will tell me the output. This is your program. You have to tell me the output. Copied the program. I have initialized A to be 10, B to be 6. Now I want the values of A. What is this? Bitwise and B. A bitwise or B. A bitwise or B. And look at this. I want just one value. That is why just 1% D. Look at this. This whole thing has to be evaluated. This is bitwise AND, this is logical AND, this is your plus operator, and this is your logical OR operator. Okay, don't get confused here. Bitwise AND, logical AND, this is your plus operator, this is your logical OR operator. So you have to see which of the operators will be evaluated first, and if they follow the same precedence, follow the associativity rule. You try to work this problem out. Okay, you can tell me the output in the next class. Is it okay, or have you completed it? लास्ट वाला नहीं हो रहा. Okay, try to analyze this. I know this was typical. Try to work this problem and tell me the output next class. Is it okay? Yes, ma'am. See the chart and then you can find out which rule to follow. Now we are done with operators. Now,
Now we'll start with selection statements. So under selection statements, you have if else, nested if, also you have switch. Okay. Selection statements means you are making a selection of the statements. Suppose I am given a set of 4 statements. If I say I have to make a selection of statements, suppose I want to choose just statement 3 as my output. So I need something, I need a proper justification. Why am I using statement 3? Right? So that justification will be provided using if or if else or nested if else or switch. Okay, that means there has to be something. If सूरज कोई प्रॉब्लम है? So why do I use this? If I have to make a choice among a set of statements, I have to use selection statements, right? Is it okay? If I say, if your mother says, if you go to the market today, buy oranges. See, you can read out this statement. If you go to the market, buy oranges. Right? That means if only this condition is true, you can execute the statement. Right? Is it okay? That means Yes, ma'am. syntax will be if some condition. Right? If this evaluates to true, your statement will be executed. This is known as if block. Okay, that means if some condition or some expression, then this is your if block. Fine. If this condition is true, then you buy oranges. Is it okay? Now, if else, if this is okay, else, if else, I'm talking about the second one. If else, if you go to the market, buy oranges, else, buy chocolates. Maybe if you're planning to go to the market, please buy oranges, else buy chocolates from a nearby shop. So this is if else. If this condition is not true, you come out. If this condition is true, you look here. Otherwise, you look what follows next after if. Right? Else, what is there? You have to buy chocolates from nearby shop. Okay. Clear about if else? Yes, Is ma'am. it okay? Now we'll look at nested if else. Nested means nested looks something like this. If some condition, inside if you have another condition, then you have maybe your statements. See, I'm using these braces under if so that I can differentiate the statement one falls under which if. Okay, and you have to use these braces whenever you write more than one statement under one if block. Okay.
if you have just one particular line inside one if block, you can omit these phrases. Otherwise, if you have multiple lines, more than one line, that means you have to include this. Otherwise, it will not be considered under this if block. I'm talking about nested if now. If condition 1, if this is true, I'll come here. Right. If condition 2, if this comes out to be true, I'll come here. Maybe I can write another if. Now look here. Nested if means inside one if I can have more than one if. Okay. That means this is my main if. My first if is my main if. Inside this first if, I can put as many number of if conditions, if else blocks I want. This first if, main if, how many if else I have? 2. This one and this one. Right. So, firstly, this will be evaluated. If this comes out to be true, this condition 2 will be evaluated. These two statements will be printed. Then, this condition will be checked. If this comes out to be true, these statement 3 and 4 will be printed. What about this? In case if at the first step, your main if doesn't come out to be successful, you will go here directly, print by. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm talking about condition. Okay. Now this condition. हेलो मैम Yes, कोई doubts? मैम सारा कंडीशन ट्रू हो गया तो मैम आउटपुट क्या आएगा हाँ मैम सारा ये if अगर ट्रू हो गया condition तो हाँ अगर सारा हो गया ट्रू तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 प्रिंट होगा देन स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 4 प्रिंट होगा और एल्स पार्ट में ये नहीं जाएगा क्योंकि ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ तभी तो इसमें गया इस वाले ब्लॉक में गया एल्स की तो जरूरत ही नहीं पड़ी ठीक है मैम Now, if, look at this, I'm talking about the condition. I'm talking about this. If and a condition, that means this can be your expression, any expression. This can be just your simple true or false, or zero or 1. Okay, right. This expression can have either a number, either any value, this condition, or it can be true or false. Only if this condition is true. If true or if 1, these will be executed. Okay, for any non-zero number, for any non-zero value with if, these condition comes out to be true. Is it okay? So at times in the program, they might not give you any condition. They'll just write if 1 or if true. So in that case, don't get confused whether this will work or not. If it is given if 1, that means this line is always true. This condition is always true. This will be executed. Is it okay? Clear? Yeah. Any non-zero value will evaluate this condition to be true. It need not be 1. It can be any non-zero value. If it is 0, if the condition evaluates to 0, then obviously your if condition is false. Instead, if else तक समझ में आया आपको? Likewise, you can write any number of ifs and else. Okay. Now take
Load this program. Let us work out the output. And mind you, whenever I'm writing if followed by condition, there's no semicolon. I said every line in C will end with a semicolon except these kind of lines. If, okay, it does not have a semicolon. If you give a semicolon, it will give you an error. Have you copied this down? Copied the whole code? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now let's look at the output. We have a variable A. I'm displaying a message to the console. Enter A. Enter the value of A. Right. That means I'm creating a space for A. Now I'm asking the user to enter the value of A. Suppose the user enters 5. 5. In that case, what is this? If 5. Right. What is this? A. Where do I get the value of A? Whatever the user inputs, that will be considered under this condition. If 5. Now 5 is a non-zero value. Is it okay? Is it okay? Yes, Yes, ma'am. ma'am. 5 is a non-zero value. So definitely the condition with if comes out to be true. So what will it print? Line will be executed. Whatever follows Yes, ma'am. under if. This is your if block. Right. So both the statements under this if block will be printed. That means if you enter 5, this line will be printed inside if block and value of A is 5. 5. Is it okay? Yes, ma'am. Okay. Now, once these two lines are executed, when you enter 5, what about this? You've completed if block, right? Definitely, there's no else. I haven't written any else here. So this line also will be printed. Is it Yes. okay? Yes, ma'am. Instead of this and get ch, remember I told you last class in Turbo C you have to use get ch to hold the screen to see the output. That is why I have used here. Okay, so it will print inside if block. Next line it will print value of A is 5. It will also print coming out of the if block. It sees the next line of execution is out of if block. Instead of this, if I write else here, okay, this if and then followed by else. So what will it give? Inside if block 5, value of A is 5, right? But
whenever I see else, what will I do? I will not execute this part because this condition was true. That is why I executed this part. Is it okay? Yes, ma'am. आपको डिफरेंस समझ में आया? अगर यहाँ पे मैंने else नहीं दिया तो मतलब if के साथ आपका else नहीं related है. No matter whether your condition of if comes out to be true or not, you have to execute this line, right? लेकिन अगर मैंने else दे दिया तो क्या है मेरा criteria क्या होगा? Only if this line, this condition comes out to be false, इस लाइन पे जाएगा और ये evaluate होगा. Fine? Is it okay? Yes, ma'am. मैम वो इफ का स्टेटमेंट ट्रू कैसे हो गया मैम? कौन सा? वो जो इफ का स्टेटमेंट if 5 है ना मैम? ये वाला? यस मैम, वो ट्रू कैसे हुआ? ये मैंने क्या कहा? इसको मैंने क्या? If some condition. यही कहा था मैंने कंडीशन. यस मैम. कंडीशन में क्या कहा था मैंने? कंडीशन कैन बी योर ट्रू और फॉल्स और 0 और 1. अगर कोई एक्सप्रेशन देंगे, कंडीशन देंगे या एक्सप्रेशन देंगे, कोई भी एक्सप्रेशन भी अगर मैंने यहाँ पे if 5 + 2 ऐसे भी देते हैं तो भी ये नॉन जीरो वैल्यू है. नॉन जीरो वैल्यू हमेशा 1 और एनीथिंग, ठीक है, 1 ऑनवर्ड्स कोई भी नॉन जीरो वैल्यू ये ट्रू कंडीशन ले लेगा. तो अगर मैंने a का वैल्यू 5 एंटर किया है तो ये नॉन जीरो वैल्यू है. इफ यहाँ पे क्या हुआ? इफ 5 हुआ नॉन जीरो वैल्यू तो ये ट्रू हो गया. ओके मैम. ठीक है? यस मैम. Okay. Now tell me something. What value should I enter in A to make this if condition false? 0. Suppose I enter 0. That means if 0, 0 is what? Condition is false. That means we'll look for else out of if. Clear? Yes, Clear? ma'am. Yes, ma'am. Now, one variation. I said if not be followed with the semicolon, right? I said this. First program I wrote without this. That means I was evaluating the condition. In case by mistake I put a semicolon here. So what happens? What do you think will it do? If I enter Error. मैम द टू स्टेटमेंट वो वाला जो स्टेटमेंट है मैम वो रीड ही नहीं करेगा मैम. अगर ये वाला कंडीशन ऐसा हुआ तो ये Error दे देगा. Yes, ma'am. Yes, doubts? Any doubts? नो मैम, क्लियर हो गया. ओके. अगर मैंने ये सेमीकोलन दे दिया तो जब आप कंपाइल करोगे अपने कोड को तो वो इस लाइन पे आपको एरर दिखा देगा. ठीक है? क्लियर है? You take down this program and you will tell me the output.
copied this program? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, will you tell me the output? You 22 understand? मैम 22 error डालेंगे आएगा तो no. Yes, what is it? मैम कोई doubt? एरर आएगा क्या? नो मैम Error एरर क्यों नहीं है? है एज इज 22 और एरर बाय नहीं आया 22 अगर इनपुट करेंगे तो मैम Expression एज आता है। आएगा। ये तो मैम बाय स्कैन एफ में एज के पहले जो बिटवाइज एंड का साइन है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? आवाज नहीं आ रही आपकी। फिर से बोलो सुमित। मैम स्कैन एफ में जो एज के पहले बिटवाइज एंड का साइन है ना उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो समझ में नहीं आया। ये वाला यस मैम। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर इसको कहते हैं, ठीक है। यस एम्परसेंड साइन को एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहते हैं। जब भी हम स्कैनफ लेते हैं, ये वाला लाइन हमारा क्या कर रहा है, एज के लिए एक मेमोरी स्पेस रिजर्व कर दे रहा है, ये वाला लाइन, ठीक है। तो हम इसको जब हम एंटर करते हैं, एंटर एज, यूजर से पूछते हैं एज क्या है, सपोज ही एंटर्स मे बी 10, तो वो एज कहाँ पे फिट होगा, ये जो हमारा वेरिएबल को एक स्पेस मिलता है ना मेमोरी में, उस मेमोरी का एड्रेस बताता है ये ऑपरेटर। तो इसका यूज ये है कि ये इस एड्रेस में जाके ये फिट करता है, ठीक है। यस मैम। मैम स्कैनर को कब यूज करते हैं और कब नहीं करते हैं? स्कैनर को जब भी आपको यूजर से इनपुट चाहिए होता है, जब भी आप कीबोर्ड से कुछ इनपुट चाहते हो, तब आपको स्कैनफ यूज करना होता है। इनपुट फंक्शन नहीं है फ्रॉम द कीबोर्ड। जैसे प्रिंटफ है आपका आउटपुट फंक्शन ऑन टू योर स्क्रीन, वैसे स्कैनफ है आपका इनपुट फंक्शन फ्रॉम द कीबोर्ड। सपोज आई एंटर एज एज 0, अब मुझे बताओ क्या होगा ये आउटपुट। बाय होगा मैम, बाय। एरर मैम 22 असाइन हो जाएगा एज पे और एरर 22 और बाय दोनों लिखा है। मैम बस बाय आएगा, बाय। क्या मैम एज इज 22 और बाय दोनों लिखाएगा। एज यस मैम एज 22 असाइन हो जाएगा और एज इज 22 लिखाएगा, प्रिंट होगा और और बाय फिर वो लिखाएगा। ओके, क्योंकि ये वाला आपने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है, आपने एज को असाइन कर दिया 22, तो डजंट मैटर इफ यू एंटर एज एज 0 आल्सो, इट विल प्रिंट 22। मैम एरर क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे? हाँ, एरर क्यों नहीं आ रहा मैम यहाँ पे? एरर इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज आई सेड दिस कैन बी योर कंडीशन, दिस कैन बी योर एक्सप्रेशन, एनीथिंग। सो व्हाट इज दिस? दिस इज योर एक्सप्रेशन। यस तो मैम ये तो ऑलवेज ट्रू ही होगा। यस, ये ऑलवेज ट्रू होगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कुछ मिले तो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये एरर दे देगा। क्लियर है? मैम एज Yes, 0 ma'am. आएगा मैम, 0 पुट करेंगे तो क्या? हम 0 डालेंगे इनपुट तो एज इज 0 आएगा। आप एक बार आपने कंपाइलर इंस्टॉल किया है क्या? नहीं। ओके ठीक है, जब हम लैब क्लासेस शुरू करेंगे या आपको बोला जाएगा, इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कोई कंपाइलर इंस्टॉल करके काम करने के, तो आप एक बार रन करना। कुछ कुछ प्रोग्राम्स में ये एज 22 देगा, कुछ कुछ प्रोग्राम्स में ये एज 0 दे देगा। ओके मैम। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? यस मैम। Yes, ma'am. यस मिस। ओके, मतलब आपका इफ एल्स क्लियर हो गया है? Yes, ma'am. यस मैम। Now you take the program as your assignment. Then we'll start with switch case.
हो गया हो तो बता। हो गया है कॉपी? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये रहा आपका असाइनमेंट। लॉट्स ऑफ व्हाट आर दीस? प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, post increment, pre decrement operators are involved, right? So just remember the logic and try to work them out. This is pre increment multiplied by pre increment of y. Okay, just try to work it out at home, then tell me the output next class. Is it okay? Yes, ma'am. यस मैम। सबने कॉपी कर लिया? if else आपका क्लियर है? एंड if else का तो आपको फ्लो चार्ट बनाना आ ही गया है। रिमेंबर फर्स्ट क्लास फ्लो चार्ट वाला if का कैसे बनाते थे, if कंडीशन का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so now we'll talk about switch case. Switch statement. Here it is mainly used under selection statement. That means you make a choice from a set of statements. You choose which statement you need as an output. Fine. Is it okay? So the syntax is, please note down the syntax. Switch, switch followed by some expression. जफर म्यूट कर लो अपने आप को। Any doubts? घर है। Any doubts? No, Switch is used for making a selection of statements which you want as an output. Switch followed by some expression. Mind you, this is an expression now. This is not any condition. This is an expression. Okay. An expression will always evaluate to some integer value. It can be an integer. This can be either an integer or a character. It cannot be a float. Okay. Now, this is a keyword. This is a keyword. This is a keyword. This is a keyword. And this is also a keyword. All these are keywords. Case value 1. Now, from where will you get this value 1?
after you evaluate this expression. Value 1 can be just 1, 2, maybe 10, 9, anything. It need not be its sequence 1, 2, 3, 4. It can be anything. It can be whether it can be 100, 200, 500, anything. If your expression evaluates to value 1, this value 1 can be any integer. If this expression and this value 1 matches, fine. That means you are supposed to execute this set of statements. Right? That means statement 1 will be executed, then break. We'll talk about break. After that, what happens? We see just one case, expressions evaluated to value. Just one set of statements will be evaluated. After that, the control will be transferred out of the if block. Okay. In case my expression evaluates to value 2, that means this will not be evaluated. It will come here. It will check whether value 2 is equal to my expression's evaluated value. Yes. Any doubts? Then this line will be evaluated. Then माइक म्यूट करो. मैम बार बार कोई अनम्यूट कर ले रहा है खुद को. वही मैं बार बार म्यूट ऑल कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कोई बार बार अनम्यूट कर रहा है. Next, suppose my expression. This expression evaluates to maybe value 50. Okay, value 50. My switch case doesn't contain this. Right. It comes here. Whether this value 1 and value 50 matches, no. Doesn't work here. It goes here. Value 2 and value 50 matches, no. Fine. Now, since it has no more cases to compare with, what will happen? It will go to the default statement. Okay. When you see that your expression doesn't match any of the case values, it will automatically look for default statement. Okay. This is an optional statement. You can give it or you can just omit it. But it is always advisable to give it. Why? So that the user knows that none of the cases were matching with the expression's evaluated value. Is it fine? Is it fine? Yes. Now let's look at an example. We'll talk about break with the example itself. Ma'am, if we do not use break statement, then will there be any syntax error? No, there won't be any syntax error, but you will not get your desired output. Now, let us see full program. Switch has all. It is always advisable to write switch under these braces.
Is it done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now look at this. You have an integer as a. Enter a. I can enter any values. Suppose I enter maybe 1. Okay, I ask the user enter the value of a. He has entered 1. Right. Now come here. Switch. What is this? A. What is this? Switch of 1. Yes, ma'am. Since I entered 1, come here. Case was the keyword. This one. This value has to be matched with this. This. Okay. 1 and 1 matches. Right? Yes, ma'am. So it will print Jharkhand. Right. It will print Jharkhand. I said as soon as it sees a match, it executes that block of statements under that case and then comes out here. Suppose it is switch 1, it matches with this case, it prints Jharkhand, comes out of this loop of the switch case, then print exit. Clear? Yes, ma'am. Okay. Now suppose if he enters 2. Okay. When I say enter A, I have entered 2. That means switch of 2. Now it will start the comparison from here. Case 1. Now 1 and 2 are the same? No? No, ma'am. No, ma'am. This case block will not be. It will go here. 20 and 2. Not same again? No, ma'am. Not executed? Yes, ma'am. Right. Now no more case comparisons are there. That means it will look for default. Default means it will, whatever, if it doesn't match anywhere, that means it will automatically match with the default case. Okay, it will say goodbye. If I enter 2, it is just say goodbye and then out of the switch case it is Exit. fine. Yes, ma'am. Now, instead of 2, if I would have entered 20, then it would have printed Bihar and then exit. Okay. Fine. Now suppose I remove the plate. I remove the break. Now I'm entering 2. Fine. 2 not matching. So it will by default print goodbye, exit. Is it okay? In case if I enter 20, that means doesn't match, leave it. Here it will make a match. It will print Bihar. Yes, ma'am. Right. It will print Bihar, no doubt. Now, you don't see a break here. That means whatever follows next, after matching, whatever follows next, that means it will also print goodbye and then exit. Okay. Is it okay? If it doesn't see a break statement here, that means whatever follows next, I was supposed to, if my case was 1, I was supposed to just print Jharkhand and exit. Right? That was my whole logic. In case if it did not see a break here, what I did, my comparison was suppose I entered 1. This case was printed, Jharkhand was printed. I was supposed to come out of the switch case and then see what follows. But what was happening? I printed Jharkhand. I did not see a break. That means I will be continuing. I will be then printing Bihar. Again, no break. I will be printing goodbye. After all the cases will be evaluated, I will be printing exit. Okay. मैम ये वाला किस नंबर के लिए होगा? ये वाला? मैम ये झारखंड बिहार गुड बाय एग्जिट सारा ये वाला? वन के लिए. अगर 1 का केस मैच हो गया तो पहले तो मेरा टारगेट था झारखंड प्रिंट करना और उसके बाद एग्जिट प्रिंट करना. लेकिन अगर ब्रेक नहीं दिया हुआ है तो
1 ऑनवर्ड्स जितने केसेस है 20 है 100 है जो भी केसेस है और डिफॉल्ट स्टेटमेंट है सारे एग्जीक्यूट। तो मैम वो 20 चेक नहीं करेगा वो नहीं, कि 1 और 20? कोई चेक नहीं करेगा, तब वो एज इट इज प्रिंट करता जाएगा क्योंकि उसका चेकिंग सिर्फ एक बार होगा। ओके इज इट ओके? यस मैम। कोई डाउट्स? मैम यस। हमें एक क्वेश्चन था, जैसे कि मुझे 2 इंटीजर के लिए सेम वैल्यू चाहिए, सेम आउटपुट चाहिए, तब क्या करेंगे? 2 इंटीजर यहाँ पर कहाँ पर? जैसे केस 1 है, फिर मान के चलिए कि 2 ले ले, उसके लिए भी मुझे सेम आउटपुट चाहिए झारखंड, तब? यहाँ पर भी झारखंड ही चाहिए। नो मैम, जैसे कि अगर यूजर 1 डाला और 2 डाला तो दोनों के लिए मुझे झारखंड ही चाहिए, तब? 1 और 2 दोनों के लिए आपको झारखंड चाहिए? यस मैम। मतलब यहाँ पे एक केस होगा, केस 2 में भी आपका झारखंड ही है, यही है ना आपका केस? यस मैम। तो आपको स्विच केस आप यहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि स्विच का इवैल्यूएशन सिर्फ एक बार होगा। ठीक है, जो भी आपका फर्स्ट नंबर आप एंटर करोगे उसी के साथ वो इवैल्यूएट करेगा। ओके, अगर आपको 2 बार झारखंड चाहिए तो हम नेक्स्ट लूपिंग पे जा रहे हैं, वहां पे हम डिस्कस करेंगे कैसे हम 2 बार झारखंड ले सकते हैं। इफ लगा दें। हाँ, इज इफ इट यूज ओके? करेंगे, इफ इज इट ओके? मैम अगर डिफॉल्ट स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो? डिफॉल्ट स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस अगर सपोज दिया गया, आपको दिया गया कैलकुलेटर डिजाइन करने को, यूजुअली स्विच केस का एग्जांपल कैलकुलेटर से ही होता है। जैसे कि अगर सपोज आपने प्लस माइनस कर दिया, आपने सपोज प्लस माइनस डिवाइड कर दिया, ठीक है, आपने ये सारे केसेस दे दिए। इन केस इफ यू मिस्ड आउट एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, तो वो किस केस में जाएगा? वो तो इवैल्यूएट नहीं हो पाएगा। इन दैट केस यू रिटर्न ऑपरेटर नॉट फाउंड। मतलब वो सिर्फ यूजर की कन्वीनियंस के लिए आप डिफॉल्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यूजर को पता चले कि कहां पे आया है, कोई केस मैच हुआ है या नहीं हुआ है। It will not give any error. It is an optional statement, but usually we used to write it. मैम Yes. मैम हम लोग स्विच के अंदर फॉर लूप यूज कर सकते हैं? Yes, you can use anywhere your for loop. We'll talk about looping and then we'll see where can you use. Switch के अंदर मतलब यहाँ पर ना, you're talking about this. यहाँ पे आप कहीं Yes, पे भी ma'am. कोई भी आप स्टेटमेंट कहीं पे भी यूज कर सकते हो। बस आपको ये इवैल्यूएट करना होगा केस के साथ। आपको जो भी यहाँ पे जो भी अगर सपोज आपको कुछ प्लस करना है, माइनस करना है, फॉर लूप यूज करना है, जो भी करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर है? स्विच का वर्किंग क्लियर है? कोई डाउट्स? Yes, ma'am. No, ma'am. No doubts. Can we move ahead? यस मैम। श्योर मैम। टायर्ड तो नहीं हुए आप लोग? यस मैम। हो गया मैम। यस मैम, टायर्ड हो गए। हम पढ़ लें। यस मैम। हो गया। नेक्स्ट क्लास में ले लीजिएगा मैम। Let us 1.5 घंटा हो गया मैम। छोड़ दीजिए। यस मैम, नेक्स्ट क्लास में मैम आज आ बहुत जाएगा। ज्यादा। 1.5 आवर्स से आप मीटिंग एंड कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास से हम लोग लूपिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हमें 90% का मैसेज थैंक भी यू दे दिया। मैम। क्या Thank you. ठीक है, कुछ नहीं, मैं वैसे ही बोलता हूँ। CR, please circulate the attendance form. मैम वो इक्वालिटी ऑपरेटर का सेकंड कंडीशन समझ में नहीं आया था मैम। क्वालिटी ऑपरेटर का सेकंड कंडीशन, यस मैम। वो कौन सा कंडीशन था? नॉट इक्वल टू वाले से। ओके, अभी हमने इससे पहले जो प्रोग्राम किया था इफ एल्स में, इफ एज इक्वल टू 22 किया था, दैट वाज असाइनमेंट ऑपरेटर। ये वाला कंडीशन क्या हुआ? अगर सपोज हमने एज को 20 एंटर किया, राइट, तो ये वाला कंडीशन इफ एज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 22, नो, इट विल कम आउट
right? Is it okay? यस मैम। अगर इसकी जगह हम लोग ये करते हैं नॉट इक्वल टू 22 तो अब क्या होगा? 20 नॉट इक्वल टू 22 ट्रू हो जाएगा। हो जाएगा ये। यस मैम। यही आपका डाउट था? यस मैम, हो गया, क्लियर हो गया। कोई और डाउट्स? मैम लॉजिकल एंड और बिटवाइज एंड में क्या अंतर है मैम? लॉजिकल एंड और बिटवाइज एंड। लॉजिकल एंड आप कोई कंडीशन के साथ यूज करते हैं। अब जब भी लॉजिकल एंड का यूजेज देखोगे, अभी जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है उसमें लॉजिकल एंड कहाँ पे यूज हुआ आप एक बार टर्न करके देखो, वो कंडीशन के साथ यूज हुआ है। लेकिन जब हम आपको बिटवाइज एंड देते हैं तो आपको सपोज 5 एंड 2, तो आपको बिटवाइज आपको 5 को रिप्रेजेंट करना है और 2 को रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद उसका वैल्यू निकालना है। यानी कि ये बिट बाय बिट निकालेंगे और ये वाला ट्रू और फॉल्स भी निकालेंगे। ठीक है? अगर कोई लॉजिकल एंड आई सेड वी कैन यूज ओनली विद कंडीशन, और कंडीशन का इवैल्यूएशन हमेशा ट्रू और फॉल्स में होता है। ओके ओके मैम। अटेंडेंस शीट सर्कुलेट हुआ? Yes, Yes, ma'am. मैम। हो गया मैम। Yes, ma'am. थैंक यू। सबको मिल गया अटेंडेंस शीट? यस मैम। यस मैम। किसी को कभी भी कुछ भी डाउट्स हो वो गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर सकता है, तो हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा क्लास रख के या डाउट क्लियरिंग क्लास रख के लोग ये डिस्कस कर सकते हैं क्लास के साथ। ठीक है? ओके मैम। अटेंडेंस शीट सर्कुलेट हो गया? कैन आई एंड द मीटिंग? मैम आप कंपाइलर बता रहे थे। यस मैम। क्या मैम कंपाइलर कंपाइलर? आप कंपाइलर कौन सा मतलब इंस्टॉल करें? टर्बो सी आप इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब अगर Okay. आपका कॉलेज स्टार्ट रहता, कॉलेज खुला रहता, तो हम यहाँ पे टर्बो सी में ही कराते हैं। वही ना मैम, क्या ही बोले आप। टर्बो सी करके सर्च करना, मिल जाएगा आपको। टर्बो सी में कर सकते हो, पोर्टलैंड सी में कर सकते हो, या कोड ब्लॉक्स में कर सकते हो। ये 3 में आप कर सकते हो। मैम एक ही सब यूज करेंगे मैम, फिर एरर वगैरह आएगा। क्या मैम बोले एक ही कंपाइलर यूज करने से सही रहेगा मैम। हाँ, तो आप मतलब प्रेफरेबली यू कैन यूज टर्बो सी। ठीक है? लैब्स में आपके यहाँ पे टर्बो सी में हम काम करवा देते हैं, लेकिन बहुत हैंग करेगा। तो इन दैट केस अगर आपके सिस्टम में ये बहुत हैंग कर रहा है तो यू कैन गो फॉर कोड ब्लॉक्स। बट ट्राई टू इंस्टॉल दिस फर्स्ट, ट्राई टू वर्क विद दिस टर्बो सी। ओके मैम। टर्बो सी। मैम विजुअल स्टूडियो हम लोग लीव कर सकते हैं? क्या लीव कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो? शुड आई एंड द मीटिंग? यस मैम, थैंक यू मैम। स्टूडियो में होगा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम VS कोड में होगा? मैम VS कोड? विजुअल स्टूडियो में मैम हो। यस आवाज नहीं है। मैम VS कोड आईडी।